हेलो गाइस। तो पाइथन सर्टिफिकेशन की वीडियो पर कमेंट किया था कुछ भाई लोगों ने कि उनको मल्टी सेट वाला क्वेश्चन आया था, और मैंने दूसरे अकाउंट से फिर से सर्टिफिकेशन करने की कोशिश की, बट मुझे मल्टी सेट वाला क्वेश्चन फिर से नहीं आया। बट एक दूसरा क्वेश्चन आया है, वो समझाने के लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया। So this is the common question, that is shape class with area method. Okay, so this is the question which was common in the last certification that I solved, and in this also. Okay, so here we have to create the constructor of rectangle class and circle class, and that's the thing that I have done in the last certification. Okay, so we will directly go to the next question that is important. Okay, so ये तो run हो गया. So we will go to the next question. We will submit this question, and the second question is important. For that I have done this video. Okay, so here string representation of objects. Okay, so here what they are giving us, they are giving us input. Okay, what they are giving input, car and boat. Okay, so here they are passing queries, number of queries, and they are passing queries in such type, in such string type. Okay, so what we have to do, okay, what is the input? Okay, sample input, car with maximum speed of 151 kilometer per hour. Okay, so we will see the code what they have done here. Okay, okay, I will reset this. Okay, I will go to the Python 3. Yeah, here in the main what they are giving, here they are taking queries, number of queries, and passing car, boat. Okay, if means they are splitting the query, and if vehicle type is car, and they are creating the object of car. In this object they are passing maximum speed and speed unit. Okay, so first of all चलो कंस्ट्रक्टर बना ही देते हैं. So def function prototype init. So init ये वाला कंस्ट्रक्टर टाइप है पाइथन में. तो इसमें एक डिफॉल्ट वेरिएबल है, that is self. Okay, so we want to take two new variables, that is for speed and unit. Okay, so I will initialize self dot speed is equal to speed, और self, okay नीचे लेता हूँ, self dot unit is equal to unit. Okay, so ये वाला कंस्ट्रक्टर बन गया अपना. And similarly here they are creating the object of boat. Okay, here in the object of boat they are giving only speed. Okay, तो मैं इसी कोड को कॉपी कर देता हूँ और बोट में बोट का कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ. But we want only one parameter in the constructor, that is speed. So I am removing the unit variable. Okay, so now what we have to do, here they are fptr dot write star yes new line and vehicle. Okay, what is vehicle? Vehicle is an object. Okay, so and after printing this we are getting this output, that is car with the maximum speed of 151 kilometer per hour. Okay, okay, so in the python in the python OOP there is a method. Okay, the okay, I have to write here def str. Okay, ये जो मेथड है str वाला, तो ये मेथड करता क्या है, ये मेथड स्ट्रिंग को रिटर्न करता है. इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है. अगर आप इधर इंटीजर रिटर्न करोगे तो वो आपको एरर देगा. चलो अभी मैं इससे इससे जो रिटर्न होती है वैल्यू इस मेथड से, वो वैल्यू इधर प्रिंट हो जाएगी. मीन्स जो जब हम ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे होंगे, मीन्स ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया व्हीकल, so we are printing that object, then this object will call this function. Which function? str function. And what we will return here, it will print in this portion. Okay, so चलो अभी करके देखते हैं. We will return here self dot speed. Okay, speed का स्पेलिंग गलत हो गया यार, speed. Okay, so I will write same method in the boat also. Okay, तो वही मैं बोट में भी लिख देता हूँ. अभी रन करके देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है. ओके, उसके हिसाब से हमें आइडिया आएगा नेक्स्ट क्या करना है. ओके, सो हियर
this is important thing, they are giving error str return non-string type integer. Okay, so this self dot speed is an integer, that's why it is giving error. so मैंने बताया था कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा इस फंक्शन का str का, इसका डिफॉल्ट रिटर्न टाइप है str string, that's why we have to write in this portion. okay, so इधर भी अभी हमें लिखना पड़ेगा str एंड दिस कंप्लीट ब्रैकेट. ओके, सो ये अगर हुआ तो बाकी का क्या, बाकी तो हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी है. ओके, सो हियर इट इज प्रिंटिंग द स्पीड 151 and 77 which is coming through the constructor while creating the object. So now what we want to do, we have to print in this format. Which format? Car with the maximum speed 150 km per hour. Okay, I will copy this, control C, and where is our car? Okay, here is our car. Okay, I will directly write this into a single quote. Okay, so now we will format this with the things. Okay, so this is our first curly bracket which is for the speed, and after that our second curly bracket for the unit. So it will, okay, so ये वाला cancel कर देता हूँ यार. So here we will format the things, here we will format with speed. okay, तो इधर str speed लिखने की क्या ज़रूरत नहीं है. आई थिंक सेल्फ डॉट speed स्पीड, और चलो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये भी हो जाए ना यार. हाँ चलो, सेल्फ डॉट स्पीड और उसके बाद क्या है, सेल्फ डॉट यूनिट. ओके, सो वी आर जस्ट फॉर्मेटिंग द थिंग्स, मीन्स हमें कैसे प्रिंट करना है क्या नहीं उसके हिसाब से. एंड सिमिलर फॉर द थिंग विच इज बोट विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 77 knots. ओके, कंट्रोल C, and here similar things, single quote, control V, and what we have to do, we have only one thing, that is speed. तो हमें सिर्फ इस स्पीड को रिप्लेस कर देना है, और इसको रिप्लेस करेंगे फॉर्मेट के साथ. ओके, कैप्स लॉक फॉर्मेट, एंड हियर वी आर टेकिंग सेल्फ डॉट स्पीड. ओके, चलो अभी हो जाएगा आई थिंक. सो वो जो मल्टी सेट वाला क्वेश्चन है उसके लिए मैं फिर से एक बार दूसरे अकाउंट से लॉगिन करके देखता हूँ. अगर मुझे क्वेश्चन मिला तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू make a video on it. Okay, so this was the second certification. I am just doing it for multi-set implementation, that question. So I will try to find that question. Okay, so thank you. We'll submit the code, and सर्टिफिकेट तो आता ही भाई, आता ही है यार. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो नहीं करो फिर भी सर्टिफिकेशन आता है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, मीन्स मन को लगना चाहिए यार कि हमने सॉल्व किया है. दैट्स वाई उसमें क्या, अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए फिर भी सबमिट होने पर भी सर्टिफिकेट तो आता ही है. ओके, सो टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, एंड थैंक यू गाइज.